Yes. So I have assigned two more assignments in the Python conditional statements. For the first assignment, I can see only one person, Akash, has submitted the work, and total only 11 students are there. If I can see, Vishal, Niranjan, Darshan, Shivani, Goraksha, Piyush, Amar, Revnath, Aniket, Akash, and Sarthak. Only this many people. What about rest of the people? If you are not joined, I'm resharing the screen link in the chat box. So please join in. And regarding the classwork, please submit the first one. For this, the questions were got shared in the WhatsApp group for the variables and expression. For conditional statements, both the assignments, if you will see, if you go on this assignment, you will see the 10 questions each. Okay, the level one is bit of easy. Okay, I think everyone can do this. इथून कोणी join करेगा? Okay. लिंक व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पण शेअर केलेली आहे. ओके, सो यू कॅन जॉईन फ्रॉम ओव्हर देअर ॲज वेल. लेवल 2 साठी पण ओके थोडे मॉडरेट क्वेश्चन्स आहेत. 10 क्वेश्चन्स ओके अँड हे कम्प्लिटली इफ एल्स कंडिशनल स्टेटमेंट्स वरती क्वेश्चन्स आहेत. So please try this. Okay, and if there is anything, you can type your queries in the WhatsApp group. Then we can see the doubt session as well. If you guys will respond, then only I'll be able to schedule the doubt classes as well. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please be responsive. Sure, sir. Sure, sir. Try and accept. Okay, so we'll start. Is my screen visual? Everyone, one second. For online. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So till now what we have saw आम्ही आपण व्हेरिएबल्स पाहिलेत. ठीक आहे. कॉन्स्टंट्स काय असतात इन द फर्स्ट क्लास. देन त्याच्यानंतर कंडिशनल स्टेटमेंट्स काय आहेत. इफ वन वे मल्टी टू वे मल्टी वे कंडिशनल स्टेटमेंट्स राईट. त्याच्यानंतर आपण काही फंक्शन्स पाहिलेत. ओके, प्रिंट फंक्शन्स आपण सेटअप केला पाहिजे त्यांचा. ओके, सो नाव विल सी ट्राय एक्सेप्ट स्ट्रक्चर. सो बेसिकली आपण जेव्हा मल्टिपल फंक्शन्स यूज करतो किंवा वेन वी ट्राय टू create some complex problem statements or solve the complex problem statements in Python or any other coding language. Okay, there are sometimes possibilities that you will not be sure whether your logic will run or not. Okay, but you want to try with the few conditions. Okay, if it get run, then it's good. But what if that gets failed? Then it will throw the multiple kind of errors, or the in your actual production level, you will get to see the errors on the screen, which is not good to showcase to the your client or the users, right?
client or user should not see whether your code is having few errors or your program is not running or your software is having some issues. Okay, it's not a good practice, and it does not showcase a good level as well. So for this, what if we get a structure like that, your particular code will go in the execution. Okay, if it gets executed, it's good. Okay, but what if that does not get executed? You should get an option to skip and throw some information or some note that okay, this particular code has been skipped for so and so reason, right? Basically, in other way we also call it as a logging. Okay, it has a different method of the logging. Logs are basically just like a entries. Okay, how in office we have the logbook, correct? How many people have entered and something like that. In programming language we have the log structure for you know your program has been executed for how many times. Okay, what were the inputs and what were the outputs. Okay, how many users has logged in. Okay, and on each execution what has happened. Okay, your what particular functionalities got called. Okay, आपके कौन से फंक्शंस कॉल हुए थे, राइट? आपके कौन से फंक्शंस कॉल नहीं हुए, उसमें से आउटपुट क्या क्या आया. ओके, सो बेसिकली स्टोरिंग ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन of your program. Okay, this we call as a logging. For the logging we have the specifically logging function, but similar to that, okay, try and except structure helps you to create a logging structure as well. Okay, in a very basic format. So if your code is working very much fine, okay, we will try. What if that does not work? Then we'll with the except we'll skip that particular code of the or that particular lines of the code or your script. Okay, so let's see, this is the line of code. Okay, so here dollar, this is your python file. Okay, then we have one a string, hello bob. Okay, now we'll try to convert that string into the integer. Is it possible? No, right? Because it has a non-integer values, correct? So it will not convert your string into the integer. So it will throw you the error on the very much line number 2. If you'll see the traceback on your line 2, and from the line 3, your code will not get executed. What if I get a chance, ठीक है, अगर मुझे चांस मिलता है कि अगर ये लाइन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो ही एग्जीक्यूट करे, वरना स्किप करे. ठीक है, अगर ऐसा फंक्शनलिटी मिला तो, राइट? सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस वी यूज द ट्राई एंड एक्सेप्ट, करेक्ट? सो प्रोग्राम यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा सेकेंड लाइन पे. नेक्स्ट लाइन ऑफ स्क्रिप्ट आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ठीक है, सो जस्ट लाइक इन जेनेरिक कंप्यूटर. ओके, जैसा आपका सीपीयू वगैरह होता है, एक ह्यूमन आता है. ठीक है, अगर कुछ एरर आया तो आपको वो बाहर फेंक देगा, राइट? व्हाट इफ अगर हमको चांस मिलेगा कि आपका जो एरर है, ठीक है, उसको स्किप कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जो इंटीजर कन्वर्जन का कोड है उसको ट्राई एंड एक्सेप्ट में डाल देंगे. सिंपल. ओके, सो ट्राई क्या करेगा? ट्राई मतलब बेसिकली सिंपली ट्राई. इवन इफ यू फेल्स दैट्स ओके. ओके, सो ट्राई जैसे अपना इफ एल्स का स्टेटमेंट रहता था. ओके, इफ एंड एल्स, सिमिलरली इसका सेम सिंटेक्स है. ओके, इफ के जगह पे ट्राई का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. ओके, ट्राई आपका कोलन एंड इंडेंटेशन ऑन द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो आपको जो भी कोड ट्राई करना है, इफ यू आर नॉट श्योर कि ये कोड वर्कआउट होगा नहीं होगा, उसके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस है. ठीक है, कुछ कंडीशन आपको पता भी नहीं है. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे ना, ट्राई फंक्शन में आपने वो कोड डाल दिया. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा कि हेलो बॉब अगर फंक्शन है तो ये क्या करेगा, ए स्किप आउट कर देगा. ठीक है, अब ये फंक्शन एरर थ्रो करेगा यहाँ पे, राइट? अगर एरर थ्रो किया तो ट्राई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता, तो आपको आपका कोड जो है वो स्किप कर देगा एंड जाएगा एक्सेप्ट में. ठीक है, एंड एक्सेप्ट आई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, दोनों में हमने वेरिएबल सेम रखे हैं. ठीक है, अगर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा. ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट में जाएगा.
मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, ठीक है, देन ओनली इट विल गो इन द एक्सेप्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करें, अपना कंप्लीट कोड था, ठीक है, देन अभी ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ट्राई वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट में जाएगा, आई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू -1। अभी नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट फर्स्ट आई स्ट्रिंग, यहाँ पे -1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट -1, ठीक है, देन ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, अभी यहाँ पे ए वाला कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, हो जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन वर्कआउट होगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस इज अ करेक्ट कोड, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं है, बिकॉज हमने ए स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, एंड ए स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इन द, दिस स्ट्रिंग इज इन द फॉर्मेट ऑफ द इंटीजर, द वैल्यूज इन द स्ट्रिंग आर इंटीजर्स, करेक्ट, एंड यहाँ पे फिर एक्सेप्ट स्किप कर देगा, एंड प्रिंट सेकेंड आई स्ट्रिंग सेकेंड 1 2 3, इसको कन्वर्ट करके इस इंटीजर स्ट्रिंग में स्टोर करेगा वेरिएबल में, एंड वो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपका रन होगा, ओके। ये समर, एनी डाउट्स? सर एक्चुअली जैसा आपने पहले स्पेसिफाइड किया था कि डेटा टाइप सेम नहीं है या फिर वो फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए अपन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो अपन ने उसको वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लाने के लिए वो स्ट्रिंग को पहले इंटीजर दे दिया, राइट? करेक्ट, ओके, ओके, गॉट इट। राइट, सो सी, अभी आप जो कह रहे हो ना कि ए पॉसिबल है ही नहीं, तो एरर थ्रो करेगा, यस। राइट, अगर आपका नॉर्मल कोड रहता, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोड रहता तो आपका ये फाइल पूरा रन किया ही नहीं रहता, करेक्ट, बट आपको क्या करना है ना कि अगर कोई एरर भी है, अभी आपको लगता है कि इस लाइन में एरर आ सकता है, तो आपको ए स्किप करने के लिए या फिर ये चीज हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका फाइल तो रन होना रुकना नहीं चाहिए, आपका कोड रन होना चाहिए, तो इसलिए फिर हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पे ए स्ट्रिंग के जगह पे आप कुछ भी इनपुट इनपुट दे दो, ठीक है, आपका कोड डेफिनेटली वर्कआउट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी ये लाइन रन हो या ना हो, ओके। सो आप अगर हम ब्लॉक डायग्राम के इसमें देखा जाए, ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपका ए स्ट्रिंग है, ठीक है, बॉब, अभी यहाँ पे ट्राई में मैंने क्या किया, तीन स्टेटमेंट्स डाल दिया, प्रिंट हेलो, आई स्ट्रिंग इसमें कन्वर्ट कर रहा है, एंड प्रिंट देयर, अभी इस तीनों में, ठीक है, अभी आपका सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन आपका रन हो जाएगा, प्रिंट हेलो, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, आई स्ट्रिंग इज टू इंटीजर ए स्ट्रिंग, अगर इसमें वापस कन्वर्जन हो रहा है, तो ए लाइन आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है, एंड प्रिंट देयर, अभी पूरे ट्राई कोड में, ट्राई के ब्लॉक में अगर कोई भी एक लाइन अगर एरर थ्रो कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो स्किप कर देगा, मतलब पूरा का पूरा कोड जो है, जो भी रहेगा ट्राई में, वो पूरा स्किप करके नेक्स्ट इसमें चला जाएगा, ओके, ठीक है, एंड देन आपका वो एक्सेप्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्या, नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ट्राई यूज करना पड़ेगा, सी, ट्राई एंड एक्सेप्ट वर्क्स एज अ ब्लॉक, हमने इफ में क्या देखा था, अगर इफ एग्जीक्यूट कर रहा है तो कंप्लीट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा, सिमिलरली आप पाइथन में कोई भी फंक्शन या फिर क्लास यूज करोगे, तो उसमें आपका पूरा का पूरा फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है, फंक्शन के ब्लॉक में वो लाइन बाय लाइन नहीं देगा, उसमें आपको फिर मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल लूप्स डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई भी लाइन में, अगर इसमें अगर ये लाइन हमने कमेंट आउट कर दी, ठीक है, अगर हम लोग एक कन्वर्जन वाली लाइन कमेंट आउट करते हैं, तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, एक्सेप्ट स्किप कर देगा, ठीक है, देन और एक एग्जांपल देखते हैं, हमने रॉ स्ट्रिंग देखा, अभी ट्राई एंड एक्सेप्ट मोस्टली, ठीक है, बेसिक स्टेट में जहाँ पे हमें इनपुट लेना रहता है, ठीक है, अभी यू डोंट नो कि यूजर इनपुट क्या देगा,
हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लास में सॉल्व किया था लास्ट इसमें, ठीक है, इनपुट यूजर फ्लोट दे, हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए थी, बट वो क्या आ रहा था, अगर हमने कन्वर्ट नहीं किया तो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी, करेक्ट। तो उस केस में क्या हो रहा था, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू आई और आपने कन्वर्जन नहीं दिला डाला, तो आपका जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा, राइट। तो वैसे सिचुएशंस भी हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक रॉ स्ट्रिंग है, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर एंटर करेगा, बट रॉ स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, करेक्ट। बट हमें क्या चाहिए, ए रॉ स्ट्रिंग नंबर चाहिए, मतलब इंटीजर टाइप में चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल इज इक्वल टू इंटीजर रॉ स्ट्रिंग, यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अभी यहाँ पे यूजर ने मान लो गलती से स्पेस दे दिया, राइट, मतलब 42 टाइप किया और स्पेस दे दिया, फिर एंटर दबाया, तो स्पेस के वजह से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी, तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी क्या, नहीं होगी, राइट। तो या फिर गलती से किसी ने नाम टाइप कर दिया, मतलब अदर देन इंटीजर कुछ तो इनपुट दे दिया, तो आपका एक कोड फेल हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको वो फेल नहीं होने के लिए क्या करना है, कि आपको जो इंटीजर कन्वर्जन है आपने हमने क्या कर दिया, ट्राई में डाल दिया, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी ने गलती से कुछ टाइप कर दिया, तो आपको यूजर को नोटिफाई करना है कि भाई, कि तुमने जो प्रीवियस इनपुट डाला था वो गलत था, ठीक है, तो आपको वापस रीट्राई करना है। तो एक्सेप्ट में मैंने क्या कर दिया, -1 वैल्यू दे दी। इसके जगह पे आप ऐसा भी दे सकते हो कि प्रिंट प्लीज री एंटर द करेक्ट इंटीजर नंबर, ओके, आप ऐसा उसको मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कि अगर आई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो नाइस वर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या इफ एल्स यूज कर दिया, इसके अलावा मैं यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर वो निगेटिव वैल्यू है तो नॉट अ नंबर, मतलब जो आपने नंबर एंटर किया है वो नंबर नहीं है, पहले 42 इनपुट दिया, नाइस वर्क, ठीक है। तो आपका ट्राई एग्जीक्यूट हुआ एंड वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, तो नाइस वर्क एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। देन उसके बाद 40-2 42 ऐसे टाइप किया मैंने, ठीक है। अभी ये आपका नंबर है क्या, इंटीजर वैल्यू है क्या, नहीं, राइट। तो क्या करेगा, ट्राई स्किप कर देगा, आई वैल्यू -1, तो आपका एल स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, नॉट अ नंबर, ओके। सो अभी हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट का कंपनसेशन, ट्राई और एक्सेप्ट क्या रहता है, कैसे यूज करना, हमने एग्जांपल्स लिखे, ठीक है। तो आपने जो प्रीवियस क्लास में जो एग्जांपल सॉल्व किया था सैलरी वाला, ठीक है, उसमें क्या कीजिए कि उसमें ट्राई और एक्सेप्ट एग्जीक्यूट करके देखिए। अभी वहाँ पे आपका जो इनपुट रहेगा, यूजर के साइड से इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो उसको ट्राई, उसका जो कन्वर्जन है, हम क्या कर रहे थे, फ्लोट कॉमा, नहीं सॉरी, ब्रैकेट इनपुट, ब्रैकेट एंटर द अवर्स, एंटर द रेट, ऐसा कर रहे थे, राइट। तो उसके जब वहां पे ना कन्वर्ट करते हुए पहले इनपुट ले लो एंड फिर ट्राई में उसको कन्वर्जन डालो, ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट, जस्ट सिमिलर टू लाइक दिस। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, देन दोनों का कन्वर्जन ट्राई में डालना, ठीक है, एंड देन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में मैसेज देना है कि प्लीज एंटर द करेक्ट करेक्ट अवर्स और करेक्ट रेट, ठीक है। वो ट्राई करके देखे अभी, ठीक है। सो प्लीज ओपन द VS कोड। ओके सो सर। इन द लास्ट लेक्चर आपला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होता, एक सेकंड, लेट मी शो यू द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट एज वेल अगेन, okay. So problem statement was to rewrite your pay computation to give the employee 1.5 times the hourly rate for hours worked above 40 hours, right. So basically we need to take the inputs from the user, for any employee has worked for how many years and what is the rate of per hour, his salary rate per hours, okay. And then we need to give the output, what will be the total salary of that employee,
Okay, so basic thing, your salary will be calculated or your pay will be calculated as hours into rate, right? The multiplication. Now here what we did, we asked the user to calculate the overtime as well. So overtime basically is above 40 hours. Okay, so whatever the hours employer has worked above 40 hours, we need to pay him the salary 1.5 times of his rate. Okay, for every hour worked up more than the 40 hours. Okay, so what we need to do is we need to take the two inputs, hours and the rate. Okay, we'll be needing both the inputs in the form of the integers, but not even the integers, the float value. Okay, more specifically, because he might work for the 40.2 hours or the rate might be 10.5 rupees per hour, right? So we'll take the inputs in the float format. Okay, then the condition, if hours, okay, the number of hours employee worked is more than the 40. Okay, the basic hours is, the basic hours means other than the overtime. Okay, the actual he worked for the 40 hours plus the overtime. So we'll calculate the first extra hours. So extra hours is total hours he worked minus 40. Okay, so gross pay will be, so basic pay, basic salary will be 40 into the normal rate. Okay, whatever the rate he was getting. And for the extra hours means the overtime. Okay, so for example he worked for 45 hours. Okay, so 40 into rate plus what is the overtime hours, 5 hours. Okay, for the 5 hours he worked overtime. So 5 into, so now we need to pay him the 1.5 times the rate. Okay, so 1.5 into rate, so 5 multiplied by 1.5 multiplied by, for example the rate is 10, they multiply by 10. Okay, in other case, if he does not work for the overtime, is less than or equals to 40, then the your salary will be normal hours into the rate. Then we'll give him the gross pay. Okay, so this was the code for last time. So what I'll do, I'll create a new file, day4.py. Okay, so I'll just copy paste the same code. Okay, so here what I said, we don't want to convert the your normal thing in the inputs only. Other than that, what we'll do, we'll drag and use the excel. Okay, so what we'll do, first we'll try to convert. Okay, uh, hours, float underscore hours is equals to float conversion into hours. Okay, and print, please enter the hours in correct format. Okay, so we did it for hours. Okay, same. So in this case we need to copy paste the same over here again. Okay, the indentation error, I'll remove this from over here. Okay, so for hours we handled. Okay, next then what I'll do, float rate, float underscore rate, please enter the values in correct format. Okay, so instead of these hours, what we'll do,
we convert, we will use the this. Okay, and instead of your normal rate, we'll use the float rate. Float rate, float rate, float hours into float hours. Okay, we need to change at this as hours, 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 hours. Okay, wait. Okay, so what we did in the try block, okay, we'll try to convert the hours and the rate, okay, in the float value, and we'll store in the new variables. Okay, so if in case let's save the file first and try. Okay, it's asking me to hours, so what I'll do 45 and I'll give the space, enter. Okay, it has taken the 45. Then what I'll do, I have given the 10, so it is 47.0. So what it did, it ignored the space value. Okay, so for example 45a, mistakenly I have typed 45a. Okay, it will ask for the rate. Please enter the values in the correct format. So what I said in the first class, your Python code will execute each line one by one. Okay, so it has executed the first line, it asks for the hours, second line rate. Now in the next line it tried to convert your hours into the float hours, but it does not possible, so it skip in the try and gone into the accept directly. So please enter the values in correct format. Okay, got it? Simple, we use try and accept function over here. Okay, कळालं का सगळ्याला ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me do one thing. I will copy paste. Okay, other than copy paste, please try at your end. Okay, खूप सिंपल कोड आहे. ठीक आहे, काही कॉम्प्लिकेटेड नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे, फक्त कन्वर्जन यूज केलं आहे आपण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इफ एल्स कंडिशन यूज केली आहे, एल्स आणि एल्स इफ कंडिशन यूज केलेली आहे. ठीक आहे, आणि आपण त्याला तिथं ट्राय अँड एक्सेप्ट ब्लॉकमध्ये टाकले त्याला. ठीक आहे, so let's see the next problem statement. Okay, don't just copy paste as it is, guys. जर तुम्हाला वाटलं तर फोटो घेऊन घ्या. Okay, so let's see the next problem statement. Write a program to prompt the score between 0.0 to 1.0. If the score is out of range, print an error. If the score is between 0.0 and 1.0, print a grade using the following table. Okay, so what we, it has asked, if the user enters a value out of range, okay, print a suitable error message and exit. For the test, enter the score 0.85. ओके, सो बेसिकली आपल्याला इथं काय करायचं की युजरकडनं आपल्याला एक स्कोअरचा इनपुट घ्यायचा. ठीक आहे,
आणि स्कोर म्हणजे बेसिकली आपण ग्रेड पर्सेंटाईल असतो 0.0 टू 1.0. ओके, ही तुमची ग्रेडची रेंज आहे. ठीक आहे. आता ह्या रेंजमध्ये आता युजरने कुठलीही व्हॅल्यू टाकली. ओके, प्रत्येक व्हॅल्यूच्या कॅल्क्युलेशनला एक ग्रेड आहे. ओके, आता समजा एखादा स्टुडंटचा ग्रेड 0.6 पेक्षा कमी आहे. ठीक आहे, तो त्याला ग्रेड काय देणार आपण? एफ. ठीक आहे. आता ती व्हॅल्यू 0.6 पेक्षा ग्रेटर आहे, बट इथे नेक्स्ट कंडिशन काय? 0.7 पण आहे. राईट. सो 0.6 पेक्षा ग्रेटर आहे पण 0.7 पेक्षा छोटी आहे, तर डी ग्रेड. ओके, नाव 0.7 टू 0.8च्या मध्ये आहे तर सी ग्रेड, 0.8 टू 0.9च्या मध्ये तर बी, आणि 0.9 टू हायेस्ट रेंज काय? 1.0. 0.9 टू 1.0 मध्ये काय व्हॅल्यू असेल तर आपल्याला त्याला ग्रेड ए द्यायचा आहे. ओके, आणि त्याने काय सांगितलंय? जर स्कोर युजरने 1.0 पेक्षा ग्रेटर टाईप केला इनपुटमध्ये, ठीक आहे, तर त्याला एरर थ्रो करायचा. म्हणजे 1.1 जर टाईप केला तर त्याला एरर थ्रो करायचा आणि कोड एक्झिट करायचा. म्हणजे एक सुटेबल एरर मेसेज द्यायचा की युजर यू हॅव एंटर द व्हॅल्यू मोर दॅन 1.0 ऑर आउट ऑफ द रेंज ऑफ द स्कोर, असं काहीतरी आपण त्याला एक मेसेज देऊ. ठीक आहे. आणि 0.0 पेक्षा कमी म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू जरी टाईप केली, ठीक आहे, तरी त्याला तसं एरर थ्रो करायचं. एक सुटेबल मेसेज द्यायचा आहे, एरर मेसेज. ठीक आहे. तर इथं आपण काय करणार? सगळ्यात पहिले रेंजच्या अकॉर्डिंगली ग्रेड फाइंड आउट करण्यासाठी आपण इफ एल्स कंडिशन यूज करणार. करेक्ट. इथं आता तुमच्या प्रत्येक लाईनमध्ये एल्स इफ मध्ये कॅल्क्युलेट होणार. ठीक आहे. आता एरर मेसेज हँडल करण्यासाठी आपण तिथे काय करू? ट्राय एक्सेप्ट ब्लॉक मध्ये टाकू. ठीक आहे. ओके, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कळाला काय करायचं? येस सर. ठीक आहे. सो तुम्ही लोक ट्राय करतात एकदा? ओके, let me do one thing. Okay, so very first thing, it has asked to take the score input. Kash, unmute We need to yourself. take the sorry. माझं Hello. मित्र होता साईडला बसवला. सॉरी सर. Akash, any doubts? Okay. Enter the score. Okay. So on the very first line, we need to take the score from the input. Input from score input from the user. Correct. We'll store. So first thing, we'll create the try except block. Okay. In the except, we need to print something, some error box. Now in the except, what we need to do? We need to convert float score input is equals to float. Will convert your input into the float value and store in the new variable. ओके, आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया. ठीक है. अभी इसके बाद इसने क्या कहा था कि अभी आपको उसको एक सुटेबल मैसेज भी देना है. ठीक है. प्लीज एंटर करेक्ट स्कोर वैल्यू. ओके, हमने मैसेज टाइप कर दिया एक्सेप्ट ब्लॉक में. ठीक है. अभी हमें क्या करना है कि उसको ग्रेड्स देने हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या बोला है? इफ. ठीक है. सबसे फर्स्ट कंडीशन हम हाईएस्ट ग्रेड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इफ योर वैल्यू इज बिटवीन
1.0 टू 0.9। ओके, अभी 0.9 इसने इंक्लूड किया है, करेक्ट। सो इफ स्कोर, सॉरी, अभी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज होगा, फ्लोट स्कोर इनपुट, ओके, इज लेस देन 1.0, ओके, 1.0, okay, what we'll do, we'll use the, sorry, 0.9, say a value greater than, okay, so float score value is less than 1.0, okay, we'll use the equals to, okay, or is greater than or equals to 0.9, okay, then print, उसने क्या प्रिंट करने बोला है हमें, ग्रेड ए, okay, we'll simply print a, okay, अब फर्स्ट कंडीशन हो गया। नाउ एल्स इफ, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली एक कॉपी कर लेंगे एंड प्रिंट। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 0.8 एंड यहाँ पे 0.9 इंक्लूड करना है क्या हमें, अभी नहीं, राइट, बिकॉज 0.9 आपका ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका बी ग्रेड, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतना एक कॉपी कर लूँगा, ठीक है, एंड आई, ओके, सॉरी, इंडेंटेशन एरर आएगा, बी सी डी, कहाँ तक बोला इसमें, डी तक ही लेना है, एंड देन एफ, ओके। तो 0.8 हो गया, 0.9, 0.8, यहाँ पे 0.7, तो 0.7 की इसके बीच में आ जाएगा सी ग्रेड, ठीक है, 0.7, 0.6, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी ग्रेड, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.0, एंड अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने एल स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है, और फ्लोट स्कोर वैल्यू यूजर ने 1.0 से ग्रेटर डाली, फिर भी वो सी ग्रेड करेगा, तो इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एल सी यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या था, 0.6, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमारे कंडीशंस हो गए। अभी यहाँ पे और एक सीन है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है ना कि अगर यूजर ने आउट ऑफ रेंज मैसेज, आउट ऑफ रेंज इनपुट दिया, तो मुझे उसके लिए अलग मैसेज चाहिए, एंड उसने अगर इनकरेक्ट फॉर्मेट डाला, ठीक है, तो उसके लिए मुझे अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर इस रेंज के बाहर रहेगा, ठीक है, आई विल यूज द प्रिंट स्टेटमेंट, प्लीज enter the score in mid range of 0.0 to 1.0 only, and please enter score value in correct format, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर्स आने के दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक तो यूजर आपका इनपुट इनकरेक्ट फॉर्मेट में दे, मतलब अदर देन द फ्लोट वैल्यू, और एल्स आपका जो यूजर है, ठीक है, वो आपको करेक्ट फॉर्मेट में दे बट आउट ऑफ रेंज दे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ट्राई एक्सेप्ट में, ठीक है, जो एरर थ्रो करने वाली चीज थी फ्लोट कन्वर्जन, उसको ट्राई एक्सेप्ट में डाल दिया, एंड आउट ऑफ रेंज के लिए मैंने क्या कर दिया, इफ एल्स स्टेटमेंट में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोनों मैसेजेस हैंडल हो गए, एरर मैसेजेस, ठीक है। समझा यहाँ पे मैंने क्या किया है एवरीवन,
गाइस कोई डाउट्स है? कोड समझा मैंने कैसे लॉजिक लिखा? सर इन फर्स्ट लाइन स्कोर इनपुट इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्कोर ते नाही लिहिलं तरी चालेल ना? ते डायरेक्ट ट्राय मध्ये आपण नाही, कन्वर्ट कारण करू की शकतो. हा, इथं तुम्हाला ऍटलीस्ट इनपुट घ्यायचं आहे ना. ठीक आहे, तुम्ही इनपुट ट्राय मध्ये नाही टाकू शकत, कारण की तुम्ही इनपुट ट्राय मध्ये टाकला तर तो तुमचा ट्राय एक्झिक्यूट करेल आणि करेक्टली तुमचा मेसेज थ्रो नाही करणार. ओके. ठीक आहे, जोपर्यंत तुम्ही इनपुट नाही घेणार तोपर्यंत तुमचा लाईन नेक्स्ट कोड एक्झिक्यूट करणारच नाही ना. ओके. आणि नंतर तुम्ही कन्वर्ट करताय. ठीक आहे, सो लेट्स ट्राय. तू जे म्हणत होता, ठीक आहे, लेट मी कमेंट आउट दिस अँड आय विल टेक द इनपुट. ओके, सो एकदा याला एक्झिक्यूट करून बघू. ठीक आहे, एंटर दिस कोड. ठीक आहे, एबीसी टाकला. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल व्हॉट यू आर सेइंग. ठीक आहे, मी इनपुट पण ट्राय मध्ये टाकून दिला. ठीक आहे, आता इथे मी काय करतो ना, इथं मला सिंगल लाईन आहे आणि सिम्पल कोड आहे, त्यामुळे हे तुमचं एक्झिक्यूट करेल. राईट, व्हॉट यू आर सेइंग. बट इफ विल गो इन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स आणि इथं तुमच्या मल्टिपल कंडिशन्स असतील, त्या केसमध्ये ही लाईन तुमची वर्कआउट नाही करणार. म्हणजे एक्झिक्यूट करेल बट तुम्हाला ॲज पर द एक्सपेक्टेड आउटपुट नाही देणार. सो इट्स अ गुड प्रॅक्टिस, ओके, टू ऑलवेज कीप द इनपुट्स आउट ऑफ द युअर ट्राय एक्सेप्ट ब्लॉक. ओके. ओके, सो तू जे सांगत होता दॅट इज अ पॉसिबल थिंग, बट ॲज पर द गुड प्रॅक्टिस वी शुड टेक द इनपुट आउटसाइड द ट्राय एक्सेप्ट ब्लॉक. ओके. Okay, so there is one more possibility. Okay, if you have the multiple inputs, okay, and as per the complex statement, it completely depends on how many complex inputs you want to take it. Okay, in that case as well, we might need to use the multiple try except. Okay, so in that case, only for the conversion try except inputs, we can use the try except for the taking input as well. So that completely depends on, म्हणजे ते तुमचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तुम्ही लॉजिक कसं राईट आउट करताय. ठीक आहे, तुम्हाला एक्झॅक्टली काय आउटपुट हवंय, तुमचं लॉजिक कसं तुम्ही डिझाईन केलंय त्याच्यावरती डिपेंड करतं. इनपुट इथं घेणं इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये एरर काहीच येणार नाही. ठीक आहे, कळालं लॉजिक कसं डिझाईन केलं आपण, कसं राईट डाऊन केलं. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कळाला होता. तर ट्राय अँड एक्सेप्ट अँड इफ एल्स इफ एल्सच्या याच्यामध्ये डिफरन्स काय मग? आपण हे इफ एल्स न ओके, पण करू शकलो असतो. ठीक आहे, तर इफ एल्स मध्ये आता समजा इफ एल्स मध्ये तुम्ही फ्लोट टाकला असता. ठीक आहे, म्हणजे हे तुमचं कन्वर्ट होतंय की नाही, तर त्या केसमध्ये त्याने काय केलं असतं ना, हे फ्लोट कन्व्हर्जन जे तिथंच तुम्हाला एरर दिला असता. सो इफ एल्स तुमचे कंडिशनल स्टेटमेंट्स आहेत. ठीक आहे, तो तुमचा कोड स्किप नाही करणार, डिपेंड्स ऑन द एरर. तो फक्त कंडिशन ट्रू किंवा फॉल्स बघेल. तो एरर हाय की नाही ते नाही फाइंड आउट करणार. ठीक आहे, ट्राय अँड एक्सेप्ट मध्ये काय करेल की तो कोड ऑफ लाईन एक डिबग करून रन करायचे ट्राय करेल. जर तो रन नाही झाला तर तो एक्सेप्ट ब्लॉक मध्ये जाणार. ठीक आहे, सो इन सिम्पल वर्ड्स, ठीक आहे, इफ एल्स कंडिशन स्टेटमेंट्स तुमचे वर्कआउट होतात ओनली ऑन द लॉजिकल कंडिशन्स. ठीक आहे, बट फॉर हँडलिंग युअर एरर बेस्ड कंडिशन्स,
Okay, if your script is throwing the error or not, or your line within the script is throwing error or not, to handle such situations we use the try and except. ओके, म्हणजे तुझं असं म्हणणं होतं ना की इथं मी इफ यूज केला असता, ठीक आहे, आणि ही कंडिशन मी इफ मध्ये टाकली असती. नाही सर, ते वरचा इफ कट करा आणि खालचा फ्लोट वाला कट करा. ते ठीक आहे, ट्राय कट करा सर. ओके, आणि ट्राय कट वरचा केला पण मी. हे कट करा, काय म्हणतात त्याला. हा, ओके, नाही ही लाईन बरोबर आहे आता. आणि खालचा काय एक्सेप्ट. आलं? हा, एक्सेप्टला मी रिमूव्ह केला. ठीक आहे, येस सर. आता असं नाही पॉसिबल का म्हणून. आता याच्यामध्ये समजा हे तुझं कन्व्हर्जन नाही झालं तर, फॉर एक्झाम्पल युजरने आता इथं मी स्ट्रिंग व्हॅल्यू दिली होती, ठीक आहे, येस. तर हा स्ट्रिंग व्हॅल्यू काय करणार, तुझा इनपुट फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करणारच नाही, राईट. हा तुझा फंक्शन एक्झिक्यूट होईल का? हा जो इनपुट आहे, ठीक आहे, तो मला फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, कारण की पायथन इनपुट कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये घेतो, स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये येस. घेतो, करेक्ट. बट मला इथे कंपॅरिझन साठी ती व्हॅल्यू फ्लोट मध्ये पाहिजे, राईट. तर मला त्याच्या आधी सगळ्यात आधी काय करावं लागेल, तुझा जो इनपुट आहे त्याला फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, येस. करेक्ट, राईट. जर तुझी ही जर समजा युजरने इनपुट F1 दिला तर तो फ्लोट मध्ये कन्वर्ट करेल का? करेल ना, करेल. करेल की नाही? का? कसं का करेल? तुझी एफ व्हॅल्यू आहे ना, एफ स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे. मी काय सांगितलं होतं, फ्लोट कन्व्हर्जन साठी तुमची स्ट्रिंग व्हॅल्यू फक्त इंटिजर व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे नंबर्स पाहिजे. जर तुम्ही तिथं अदर दॅन नंबर्स तुम्ही कॅरेक्टर्स दिले तर तो कन्वर्ट नाही करणार. मग ट्राय मध्ये कसं कन्वर्ट करेल? ओके, ट्राय मध्ये तो काय करतो, ट्राय मध्ये कन्वर्ट नाही करत. तो ट्राय मध्ये काय करेल, तो कन्वर्ट करायचे ट्राय करेल, ठीक आहे. जर कन्वर्ट नाही झाला तर मला युजरला, ठीक आहे, आता कन्वर्ट नाही झाला तर तो त्याने काय केलं असतं, त्याने एरर थ्रो केला असता. बट मला इथे युजरला एरर नाही दाखवायचा आहे, मला एररच्या जागी काहीतरी मेसेज द्यायचा आहे की भाई तूने जो इनपुट दिला होता, ठीक आहे, तो करेक्ट फॉर्मॅट मध्ये दे. जर त्याने ओके. इथं विना ट्राय एक्सेप्ट आपण एक्झिक्यूट केलं असतं, त्याने ही लाईन पण एक्झिक्यूट नसते केली, त्याने डायरेक्टली एरर दिला असता, ट्रेसबॅक एरर. ओके. नाव गॉट इट. ठीक आहे. हा, मला एरर न देता मला करेक्ट फॉर्मॅट मध्ये फक्त मेसेज पास आउट करायचा आहे. ओके, म्हणजे इफ च्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्याच लाईनला स्टॉप झाला असता प्रोग्राम. या. राईट, तो इथंच कोड स्टॉप झाला आणि पुढचं एक्झिक्यूट केलंच ओके. नाही त्याने, या. तो डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक मध्ये गेला. ओके, गॉट इट. ओके, अजून कोणाला डाऊट? ओके, तुम्हाला ट्राय एक्सेप्ट काय यूज करतो आणि इफ एल्स काय यूज करतो याचा डिफरन्शिएशन कळाला येस. सगळ्यांना? Yes, sir. अजून परत काही कन्फ्युजन आहे? ओके, ठीक आहे, सिंपल कोड होता. सो आता मी जे असाइनमेंट दिलेत तुम्हाला, ठीक आहे, या असाइनमेंट मध्ये पण, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स येतील, ठीक आहे, जिथे तुम्हाला इनपुट इंटिजर मध्ये घ्यायचं, तिथं पण ट्राय एक्सेप्ट यूज करा, ठीक आहे. हे दोघं
चॅप्टर 3चे 2 असाइनमेंट्स आहेत. कंडिशनल लेवल 1 आणि लेवल 2. दोघांमध्ये 10 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स आहेत. ठीक आहे. सो लेट्स सी, आपण एक 5 मिनिटामध्ये फटाफट क्वेश्चन्स बघू. राईट अ प्रोग्राम दॅट टेक्स अन इंटिजर इनपुट. ओके, एक इंटिजर इनपुट घ्यायचा अँड प्रिंट ऑड इफ द नंबर इज ऑड अँड इवन इफ द नंबर इज इवन. म्हणजे बेसिकली तुम्हाला जो युजरकडनं इनपुट आहे तो ऑड आहे का इवन आहे सर हा ते क्वेश्चन फाइंड आउट करायचे. असाइनमेंट ऑड वन इवन कसं मध्ये पण फाइंड आउट होता. करतो असाइनमेंट वन. ओके, काही क्वेश्चन्स रिपीट झाले असतील. येस. ओके, सो त्याच्यानंतर क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट. ठीक आहे, म्हणजे इथं काय करणार आपण, सगळ्यात आधी युजरचा एज इनपुट मध्ये घेणार. ठीक आहे, एज म्हणजे कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये येणार तुमचं, इंटिजर किंवा फ्लोट. फ्लोट. ठीक आहे, सो तुम्ही तो इनपुट घेतला. त्याच्यानंतर कंडिशन काय लावायची आपल्याला, नंबर ग्रेटर देन 18. जर एज 18 पेक्षा मोठं असेल तर तो एलिजिबल आहे. ठीक आहे. देन राईट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ नंबर इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0. ठीक आहे, 3 कंडिशन. युजरकडनं इनपुट घ्यायचं आहे अगेन. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह म्हणजे ग्रेटर दॅन 0, निगेटिव्ह म्हणजे लेस दॅन 0 आणि 0 म्हणजे इक्वल्स टू 0. इफ एल्स मध्ये. येस. ठीक आहे, देन बेस्ड ऑन अ स्कोअर बिटवीन. ओके, सिमिलरली आपण आता जस्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सॉल्व्ह केला हा. ठीक आहे, accept two numbers as a input and print the larger one. म्हणजे युजरकडनं 2 व्हॅल्यूज घ्यायचे आहेत, 2 इनपुट्स घ्यायचे आहेत, त्याच्यातला लार्जर नंबर कुठला आहे, ठीक आहे, तो प्रिंट आउट करायचा. ठीक आहे, देन राईट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन इयर इज अ लीप इयर. ओके, सो इयर इनपुट मध्ये घ्यायचा. आता लीप इयर म्हणजे विच इज डिव्हिजिबल बाय 4 अँड विच शुड नॉट बी डिव्हिजिबल बाय 400 और 100. 4 ने डिवाइड व्हायला पाहिजे पर 100 ने नाही व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, लीप इयरची एक्झॅक्ट कंडिशन तुम्ही सर्च आउट करा. ठीक आहे, सिंपल आहे. चेक इफ अ गिवन नंबर इज मल्टिपल ऑफ 10. ठीक आहे, नंबर घ्यायचा आहे. मल्टिपल ऑफ 10 साठी आपण काय यूज करणार, रिमाइंडर फंक्शन. ठीक आहे, इनपुटला आपण रिमाइंडर 10 ने जर 10चा रिमाइंडर फाइंड आउट केला विच शुड बी इक्वल टू द 0. ठीक आहे, जर रिमाइंडर 0 आला म्हणजे 10 ने डिव्हिजिबल आहे. Based on a student score, determine if they pass. Passing score is greater than 40. Input a character and determine if it's a uppercase or lowercase. ओके, सो आता ह्या केसमध्ये स्ट्रिंग व्हॅल्यूचे मल्टिपल फंक्शन्स असतात. ठीक आहे, मी फंक्शन एक पूर्ण पायथनचे हँडबुक शेअर करेल. ठीक आहे, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये अराउंड 240 पेजेसची आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रिंगचे फंक्शन्स पण सापडतील. ठीक आहे, सो अप्पर केस म्हणून एक फंक्शन आहे जो की फाइंड आउट करतो की तुमचे स्ट्रिंग व्हॅल्यू सगळे अप्पर केस म्हणजे कॅपिटल आणि लोअर केस म्हणजे स्मॉल व्हॅल्यूज, स्मॉल कॅरेक्टर्स म्हणजे स्मॉल ए आणि कॅपिटल ए. ठीक आहे, सो ते फाइंड आउट करायचं की सगळे इनपुट स्ट्रिंग अप्पर केस आहे की लोअर केस आहे. ठीक आहे, देन इनपुट अ डे 1 to 7 अँड डिटरमाइन इट्स अ वीकेंड और वीकडे. ठीक आहे, म्हणजे वीकडेज म्हणजे मंडे टू फ्रायडे आणि वीकेंड म्हणजे सॅटर्डे संडे. ठीक आहे, पहिले हे 10 स्टेटमेंट सॉल्व्ह करा. देन नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण हे नेक्स्ट 10 स्टेटमेंट चेक करू. ठीक आहे, आणि ऑलरेडी एक दिलेला होता असाइनमेंट, त्याच्यामध्ये पण फक्त एका जणाने सबमिट केलेला आहे, आकाश पवारने. बाकी सगळ्या लोकांचे असाइनमेंट बाकी आहेत. ठीक आहे, आणि अजून पण क्लासरूममध्ये फक्त 11 स्टुडंट्सने जॉईन केलेले आहे. ज्यांनी जॉईन नसेल केलेलं प्लीज जॉईन. लिंक ऑलरेडी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर केलेली आहे. ठीक आहे, त्या लिंकवरनं तुम्ही जॉईन करू शकता. ठीक आहे, मी